Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies. Also revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 5, which is more on Adobe Photoshop. So without wasting any further time, let's understand about this chapter. The name of the chapter is more on Adobe Photoshop CC, and the topics which we will study in this chapter are painting tools, retouching tools, blur, sharpen and smudge tools, eraser tool, type tool, navigation tools and layers. Now, firstly we have an activity which says match the following. So यहाँ पे this tool is our lasso tool, this tool is our eraser tool, this is our marquee tool, this is brush tool, and this is the doodle dodge tool. Now, in the previous chapter, you have learned about the basics of Photoshop, like introduction to tools, various other parts of Photoshop window, and in this chapter, हम लोग learn करेंगे about various tools जैसे retouching tools जो मदद करते हैं to remove flaws and imperfections from an image and give it an enhanced effect. Now, सबसे पहले आते हैं पेंटिंग टूल्स. तो इन द प्रीवियस चैप्टर आपने ये सीखा दैट पेंटिंग टूल्स क्या होते हैं. लेट्स लर्न अबाउट some other painting tools जैसे color replacement tool, eyedropper tool, 3D material eyedropper tool, color sampler tool and ruler tool. So these are the few tools जो हम यहाँ पे study करेंगे. First name given by Thomas to Photoshop program was Image Pro. ब्रश टूल क्या करता है. ब्रश टूल का हम यूज करते हैं जब भी हमें पेंट करना होता है ऑन एन इमेज यूज अ गिवन कलर जस्ट लाइक अ नॉर्मल ब्रश. नाउ अब यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रश के साइजेस को यूज कर सकते हो एंड ब्रश टिप्स का यूज कर सकते हो टू डू पेंटिंग जॉब. फोटोशॉप के पास 4 टाइप्स ऑफ ब्रश टूल्स यूज किए जाते हैं ऑफ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हियर वी डिस्कस अबाउट कलर रिप्लेसमेंट टूल. अब हम डिस्कस करेंगे कलर रिप्लेसमेंट टूल के बारे में. तो इसका हम यूज करते हैं जब भी हमें एग्जिस्टिंग कलर जो है इमेज का उसको रिप्लेस करना होता है with the foreground color as shown in the figure like this. Now हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं टू यूज द कलर रिप्लेसमेंट टूल. उसके लिए हमें क्या करना है, ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है, देन हमें वहां से चूज करना है कलर रिप्लेसमेंट टूल. तो द पॉइंटर शेप जो है वो चेंज हो जाएगी टू अ टारगेट सिंबल एंड चूज एन एप्रोप्रिएट फोरग्राउंड कलर फ्रॉम द कलर पिकर. नाउ आपको होल्ड डाउन करनी है अपनी ऑल्ट की एंड लेफ्ट माउस बटन टू सिलेक्ट एनी एप्रोप्रिएट कलर फ्रॉम द कलर पिकर टूल. You will notice that जो color है वो change हो जाएगा in the foreground color box in the tool palette. Then आपको अपने mouse को drag करना है to paint strokes using the brush on the image and observe the changes in the picture. Now next is eyedropper tool. तो eyedropper tool मदद करता है हमारे to change the foreground या फिर background colors by lifting them from the image. ये मदद करते हैं जब भी हम क्या चाहते हैं, हम existing color का use करना चाहते हैं in the image for some other element. So to use eyedropper tool we need to follow certain steps. सबसे पहले अपनी इमेज ओपन करनी है इन फोटोशॉप फ्रॉम विच आपको अपना कलर लेना है. देन सेलेक्ट करना है eyedropper tool फ्रॉम द टूल्स पैनल या फिर आप प्रेस कर सकते हो आई की को फ्रॉम द कीबोर्ड. Now click on the color that you want to use from your image. The selected color becomes your new foreground or background color. In November 2019, Adobe released a full version of Photoshop for iPad. Retouching tools जो होते हैं वो available होते हैं in Photoshop and they are used for modifying the arrangement of pixels in an image to remove imperfections, ताकि वो imperfections को remove कर सके from the image and उसको एक better finish provide करे. So following are the retouching tools available in Photoshop CC. फर्स्ट वन यहाँ पे आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है क्या करता है, इसको हम यूज करते हैं जब हमें क्विकली रिपेयर करने होते हैं इम्परफेक्शंस जैसे ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, स्क्रैचेस एंड सो ऑन द इमेज एंड फोटोग्राफ्स. तो जो टूल है ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, सैंपल करता है फ्रॉम अराउंड द एरिया बीइंग रिपेयर्ड एंड द स्टेप्स टू यूज दीज टूल्स आर एज फॉलोज. आपको अपनी इमेज ओपन करना है इन फोटोशॉप दैट यू वांट टू रिपेयर. फॉर एग्जांपल हमें ये इमेज रिपेयर करनी है. नाउ आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का सेलेक्ट करना है. चूज द ब्रश साइज उसका टाइप ऑप्शंस बार में से हम चूज करेंगे. देन क्लिक एंड ड्रैग द टूल ओवर द स्पॉट्स. फिर आपको क्या करना है, जो आपके स्पॉट्स हैं उन पे क्लिक करके ड्रैग करना है अपने टूल को. व्हेन यू ड्रैग द ब्रश ये आपको शो करेगा एक ब्लैक मार्किंग एंड दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी लाइटेंड लाइक दिस. जब हम यहाँ पे इन ब्लेमिशेस, इन एक्नेस के अराउंड में टूल को रोटेट कराएंगे तो वो इस तरीके से रिपेयर हो जाएगा और स्किन एकदम
क्लियर दिखेगी, ब्लेमिश फ्री दिखेगी। शॉर्टकट की होती है टू यूज हीलिंग ब्रश टूल इज जे। Healing brush tool also works in a similar manner. The only difference between spot healing brush tool and healing brush tool is that the latter you have to define a source point. Press Alt key and click on the image to define a source point. तो क्लोन स्टेम टूल क्या होता है? क्लोन स्टेम टूल मदद करता है हमें टू पेंट विद अ सैंपल ऑफ एन इमेज। ये क्या करता है कि इट टेक्स द पिक्सेल्स फ्रॉम अ सिलेक्टेड एरिया एंड क्लोन्स और डुप्लीकेट्स देम इनटू अनदर एरिया। टू यूज क्लोन स्टेम टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे पहले आपको अपनी इमेज ओपन करनी है, देन क्लिक द क्लोन स्टेम टूल ऑन द टूल्स पैनल। नाउ इन द ऑप्शंस बार आपको क्लिक करना है ऑन ब्रश प्रीसेट पिकर पे टू सेट द ब्रश साइज, स्टाइल एंड हार्डनेस ऑफ द टूल। यू कैन यूज एनी ब्रश टिप, आप कोई भी ब्रश टिप यूज कर सकते हो क्लोन स्टेम टूल के साथ में, जो आपको एक प्रिसाइज कंट्रोल प्रोवाइड करती है ओवर द साइज ऑफ क्लोन एरिया। Hold down the Alt key, cursor shape changes to a target symbol which is this. Click on the image to define a source point. Then click and drag the mouse to that place जहां पे भी आप क्लोन क्रिएट करना चाहते हो। क्लोन के लिए शॉर्टकट की होती है S। जो पैटर्न स्टैम्प टूल है वो मदद करता है हमारी टू फिल एन एरिया विद अ सिलेक्टेड पैटर्न एंड इट वर्क्स क्वाइट सिमिलर टू क्लोन स्टैम्प टूल। बट जो ओनली डिफरेंस है यहाँ पे वो ये है दैट आफ्टर डिफाइनिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू and selecting the pattern from the pattern picker, you do not have to select the source point. आपको source point select नहीं करना पड़ता in the image. Place करना है pointer inside the area to be painted with pattern and drag them out. पैच टूल क्या करता है? पैच टूल का हम यूज करते हैं टू सेलेक्ट अनवांटेड एलिमेंट्स। जो हमारे अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, मतलब जो हमारे लिए अननेसेसरी है इमेज के अंदर, उनको सिलेक्ट करने में और रिप्लेस करने में मदद करता है विद मैचिंग कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। एंड द स्टेप्स टू यूज पैच टूल आर: open the image in Photoshop in which you want to patch some details or insert some extra objects and select the patch tool from tools panel. Now आपको ड्रॉ करना है एक एरिया अराउंड योर ऑब्जेक्ट से A like this which you want to replace, जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो। अब आप यूज कर सकते हो सिलेक्शन टूल का टू मेक द सिलेक्शन। द एरिया फ्रॉम विच यू वांट टू रिप्लेस इज B और जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हो वो है B। Just click and drag a area over B area and you will see a preview of images as you drag it. तो जब आप ड्रॉप करोगे एरिया A को ओवर द एरिया B, फोटोशॉप जो है वो क्या करेगा? मैजिक करेगा ऑफ ब्लेंडिंग द पिक्सेल्स फ्रॉम द सोर्स D टू द डेस्टिनेशन एरिया A perfectly. Deselect by pressing Ctrl plus D. It is so simple but you might not get an accurate result every time. हो सकता है आपको हर टाइम एक accurate result यहाँ पे नहीं मिले. You may have to practice a few times. Please ensure that you are working on a duplicate background layer or using a separate empty layer, not your original background layer. Dodge tool का हम use करते हैं to make the darker portions of the image lighter. Dodge tool is again used to give effects to an image. There are three options in the submenu if you right click on the dodge tool. तो आप dodge tool पे right click करते हो तो थ्री submenus आपके पास आते हैं which is dodge tool, burn tool, sponge tool. तो यहाँ पे क्या है? dodge tool का मतलब है इसका हम यूज करेंगे to make the darker portions of the image lighter. Burn tool का यूज करते हैं हम to give a burning effect, that is to darken the pixels of the image or a selected portion of the image. Sponge tool इसका हम यूज करते हैं to give a spongy effect to the image and follow the given steps to use dodge tool. Open करना है image and then click on dodge tool. Select करना है brush size and other properties of the dodge tool from options bar. Click and drag the mouse on the image to apply the effect of the selected tool. Also dodge tool के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है O. Here is a question: which tool is used to lighten the area in an image? तो हमने ऊपर एक टूल देखा था which is spot healing tool, spot healing brush tool, जो क्या करता है? लाइटन करने में मदद करता है एरियाज को इन अ इमेज। नाउ ब्लर, शार्पर एंड स्मज टूल का वर्क क्या होता है? ये जो टूल्स है ये मदद करते हैं टू चेंज द अपीयरेंस या फिर फोकस ऑफ द सिलेक्टेड एरिया ऑफ द इमेज। तो ब्लर टूल क्या करेगा? ये हमारी इमेज को हैसी या फिर सॉफ्टन बना देगा उसके पिक्सेल्स को ऑफ द इमेज। ये मदद करता है टू हाईलाइट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज, दैट इज शार्पनेस रिड्यूस कर देता है। एंड द स्टेप्स टू यूज इट आर: ओपन अ फोटोग्राफ इन फोटोशॉप, ब्लर टूल को क्लिक करना है, एक डिजायर्ड ब्लर टूल साइज सिलेक्ट करना है, स्ट्रेंथ
from the context menu. Then select the layer that you wish to work on from the layers menu. Move the blur tool over the area जो आप चाहते हो कि blur हो जाए, holding down the left mouse button, and then drag करना है tool को over the image area. So this is the original image and this is the image with blur tool effect. शार्पन टूल क्या करता है, इस टूल को हम यूज करते हैं, ये जो टूल है ये कंट्रास्ट होता है शार्पन टूल का. दिस टूल लेट्स यू इंप्रूव द क्लैरिटी. ये जो शार्पन टूल है ये हमारी इमेज की क्लैरिटी को एनहेंस करता है, क्लैरिटी बढ़ाता है बाय शार्पनिंग द आउटलाइंस ऑफ द इमेज मोर प्रोमिनेंटली. तो इसके स्टेप्स होते हैं, फोटोग्राफ ओपन करना है, शार्पन टूल को चूज करना है, सेलेक्ट करना है डिजायर्ड शार्पन टूल साइज, मोड एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. देन सेलेक्ट द लेयर दैट यू विश टू वर्क ऑन फ्रॉम द लेयर्स मेन्यू. फिर आपको मूव करना है अपने शार्पन टूल को ओवर द एरिया that you wish to sharpen by holding down the left mouse button and dragging the tool over the image area. So this is your original image and this is your sharpen image. Smudge tool का वर्क क्या होता है? Smudge tool, as the name implies, ये allow करता है to smudge the image around it if it is made up of wet paint and you have dragged your fingers through it. नाउ आपको अपने फोटोग्राफ ओपन करनी है, स्मज टूल को चूज करना है, डिजायर्ड टूल साइज, मोड, स्ट्रेंथ चूज करनी है, फिर आपको लेयर चूज करनी है जिसपे आप चाहते हो कि आप इस टूल को अप्लाई करो. मूव करना है स्मज टूल ओवर द एरिया दैट यू विश टू स्मज बाय होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैगिंग द टूल ओवर द इमेज एरिया. तो लाइक यू कैन सी दिस इज योर नॉर्मल पिक्चर एंड हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्मज क्रिएट कर दिया. सी द डिफरेंस. नाउ इरेजर टूल को हम एंटी ब्रश टूल भी बोलते हैं. ट्रू टू इट्स नेम ये वर्क करता है लाइक अ इरेजर और इरेज करता है एरिया विच वी क्लिक ऑन एंड ड्रैग द इरेजर टूल. तो ये हमारे लिए अनवांटेड पार्ट्स को हमारी इमेज के रिमूव करने में मदद करता है. 3 ऑप्शंस होते हैं अंडर दिस टूल, लेट्स लर्न अबाउट देम. तो इरेजर टूल इरेज करता है टेक्स्ट एंड इमेजेस बेस्ड ऑन द लेयर्स. इफ द यूजर ऑन द टेक्स्ट लेयर, देन जो टेक्स्ट है that the tool is dragged over वो इरेज हो जाएगा. साइज एंड स्टाइल इरेजर का हम सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द ऑप्शन बार. बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है, बैकग्राउंड इरेजर टूल डिलीट करता है एनी पार्ट ऑफ द इमेज दैट इज ऑन द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. So this tool is often used to extract objects from the background. Magic Eraser tool ये डिलीट करता है areas based on similar colored pixels and it is very similar to the Magic Wand tool. ये जो tool है ये ideal होता है for deleting areas with the same color जो contrast करते हैं to the rest of the image. So for this आपको open करना है अपना image, select करना है eraser tool, select the eraser size in options bar, then select the eraser mode. There are 3 modes available: brush, pencil and block. Select the opacity in the options bar. Higher opacity क्या करेगी, erase करेगी more number of pixels at a time. Click and drag over the area that you want to erase and the area will be erased. Working with text, जो टाइप टूल होता है वो हमारी मदद करता है टू एंटर टेक्स्ट इधर हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली इन अ इमेज. जो टेक्स्ट टाइप होता है यूजिंग दिस टूल इज एडेड टू अ सेपरेट लेयर नोन एज टाइप लेयर. नाउ एडिंग एंड पोजीशनिंग द टेक्स्ट, तो हम ऐड कर सकते हैं अपनी इमेज के अंदर टेक्स्ट को, उसको मूव करा सकते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट को टू प्लेस इट एनीवेयर इन द इमेज बाय यूजिंग स्टेप्स. ओपन द इमेज, राइट क्लिक ऑन द टाइप टूल in the tools panel. From the sub menu जो appear होगा वहां से आपको kind of type tool choose करना है that you want to use. Select the font type, color, size and so on from the option bar. Click anywhere on the image, cursor will appear. Type the required text at the cursor's position. आप select कर सकते हो, manipulate कर सकते हो अपने typed text को exactly the way you want to do in a word processor. To move the text in a required place, आपको click करना है type layer पे in the layouts panel, then click on move tool in the tools panel. Click on the written text, drag it to the desired place and release the mouse button. Horizontal type tool type करता है text को from left to right and vertical type tool from top to bottom. So what is wrapping text? Wrapping text का हम use करते हैं to position the letters of text in different shapes. और इसको use करने के लिए हमें रैप ऑप्शंस के कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे सिलेक्ट द टाइप टूल एंड टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट इन द इमेज. फिर आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन क्रिएट रैप टेक्स्ट ऑप्शन इन द ऑप्शंस बार. रैप टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स हो जाएगा. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द स्टाइल ऑप्शन एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्टाइल. यहाँ पे वी आर सेलेक्टिंग द आर्ट स्टाइल. You can also change bend, horizontal, vertical, distortion settings in the dialog box. Click on OK to apply the chosen wrap style to the text. तो अभी हमारा स्टाइल यहाँ पे इस तरीके से था.
and now it is in such a way like this. Navigation tools. Photoshop allow करता है हमें to modify view of an image using the navigation tools. Let's learn about them. सबसे पहले आता है hand tool. जो hand tool है ये मदद करता है to scroll the image on the canvas. Holding down the spacebar key also मदद करता है to achieve the same result. Now by double clicking the hand tool icon in the tools panel, जो image है वो fit हो जाएगी to the screen. ये useful है when you are zoomed in the image and working with lasso tool for perfect selection. Rotate view tool ये मदद करता है as a keyboard shortcut R. ये rotate करता है whole canvas of the image and not just the image. Compass appears in the center. As soon as आप rotate करोगे, click करोगे rotate view पे, तो जो mouse pointer है वो change हो जाएगा into rotate view icon and now you can click and drag to the rotate the canvas clockwise or anti-clockwise. Red marker at the top of compass points to the top of the image. Zoom tool मदद करता है to zoom into certain areas to get a closer view of the image. Choose view, then zoom in या फिर view, zoom out from the application bar and to use the keyboard shortcut hold control and press plus to zoom in and control and minus to zoom out. What are layers in Photoshop? Layers जो है वो transparent sheet होती है जो hold करके रखती है objects को that are stacked on top of each other and when we have number of objects कि हमेशा हमें क्या देता है? It is always better to distribute the objects in different layers. So as it makes the work process much easier. We can draw and edit objects in one layer without affecting the objects on another layer. Layers palette. Layers palette list होती है of all the layers, layer sets and layer effects in an image. We can accomplish many tasks such as creating, hiding, displaying, copying and deleting layers using the buttons in the layers palette. तो अगर हमें लेयर्स पैलेट को डिस्प्ले करना है इन फोटोशॉप, हमें अपनी विंडो ओपन करनी है मेन्यू एंड सेलेक्ट करना है लेयर्स ऑप्शन को एंड लेट्स गेट फैमिलियर विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेयर्स पैलेट व्हिच विल हेल्प अस टू वर्क विद डिफरेंट लेयर्स इन एन इमेज फाइल. जैसे ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लेयर स्टाइल आइकन, द थंबनेल व्यू ऑफ द इमेज इन द लेयर, आई आइकन इन फ्रंट ऑफ द लेयर जो शो करता है दैट इट इज विजिबल. Click here to access a command menu for working with layers. This is layers name, create a new layer icon, delete layer icon. You must have noticed that in layers palette जो lowermost layer होती है on which other images are placed to make a collage are named as a background layer. Layer can only be a background layer. वहां पे सिर्फ background layer ही हो सकती है इमेज की. आप डिलीट कर सकते हो background layer को या क्रिएट कर सकते हो उसका एक डुप्लीकेट, बट आप चेंज नहीं कर सकते उसका ऑर्डर इन द लेयर हायरार्की. नाउ एडिंग अ न्यू लेयर. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम न्यू लेयर को क्रिएट कर सकते हैं व्हेन यू पेस्ट एनी ऑब्जेक्ट इन योर इमेज. टू एड अ न्यू लेयर फॉलो द गिवन स्टेप्स. सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऑन न्यू लेयर बटन पे इन द लेयर पैटर्न और सिलेक्ट कर सकते हो आप लेयर देन न्यू लेयर ऑप्शन को. न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. देन डिफाइन नेम इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ओके. रीनेमिंग अ लेयर का मतलब होता है कि आपको डबल क्लिक करना है अपने लेयर की नेम पे और आप क्या कर सकते हो उसको एक डिजायर्ड न्यू नेम दे सकते हो एज यू वांट. जैसे ये यहाँ पे हमारा हाईलाइटेड लेयर नेम है और ये हमारा रीनेम्ड लेयर है. पहले इट वाज लेयर 1, नाउ इट इज ब्लैंक लेयर. नाउ लॉकिंग ऑफ लेयर्स. हम लॉक कर सकते हैं लेयर्स को टू प्रोटेक्ट देयर कंटेंट्स एंड जो 4 डिफरेंट लॉक आइकन्स होते हैं एट द टॉप ऑफ पोर्शन ऑफ द लेयर पैलेट अलाउ करते हैं हमें टू लॉक लेयर्स इन 4 डिफरेंट वेज and follow the given steps to lock a layer. Select करना है हमें layer that you want to lock from the layers palette. Click the lock transparent pixel icon to lock the transparent pixels in the layer. To unlock the layer आप click कर सकते हो उस पे again. Click the lock image pixel icon to lock the pixels from the form the image and to unlock it आप again उस पे click कर सकते हो. Click the lock position icon to lock position in the layer, the image, and to unlock you can click it again. Click the lock all icon to lock all the contents of the layer and to unlock again आप उस पे click कर सकते हो. Deleting a layers means आपको कोई भी layer है जिसको delete करना है, so what you will do, select करोगे layer जिसको भी आप delete करना चाहते हो, right click on it and select the delete layer option from the shortcut menu. Then you can create new layer by using shift plus control plus n key combination. एंड वो आपसे एक प्रॉम्प्ट मैसेज में पूछेगा दैट यस यू वांट टू डिलीट द लेयर और नॉट. तो अगर आप करना चाहते हो यू कैन क्लिक ऑन यस
And if you don't want to delete it, you can choose no. There is an activity that name the following tools. So the first one here is image saturation. Today we have then tool used to make the part of image lighter in color, heating brush tool. Then tool used to copy a part of image. Another area is clone stem tool. Like this, the rest three you will answer at your own. Let's revise the chapter. Photoshop provide करता है several tools to retouch and repair flaws areas in an image to make it flawless. These tools include clone stamp tool, pattern stamp tool, burn dodge tool, smudge tool और blur tool and so on. जो clone stamp tool होता है वो हमारी मदद करता है to duplicate part of an image. Type tool helps you to type messages in an image. Text wrap is used to position letters to the typed text in different shapes. Layers are like transparent sheets that can have images and are stacked on top of each other. Using layers, you can work with one element of an image without disturbing its other elements. Let's do exercise of the chapter. First is tick the correct answer. Which tool is used to create a smooth stroke of the foreground color? Color replacement. Which tool is used to darken the areas of the image? Burn tool. Which tool is used for duplicating objects or moving a defect in an image? Hatch. Which tool is also called an anti-brush tool? Eraser tool. Which tool is used to move the zoomed picture within the window? Zoom tool. Test is true false. Burn tool soaks up the color like a sponge from an image. True. Hot healing brush tool is used to repair imperfections. True. Sponge tool is used to increase or decrease the color saturation of an image. True. The dodge tool is used to lighten a selected part of an image. False. The eye icon in front of a layer shows that its contents are visible. True. Let's do fill in the blanks. Adobe Photoshop is basically used for dash and dash photographs to make them look attractive. So here the first is Adobe Photoshop is basically used for editing and retouching photographs. Photoshop image can be made up of several layers. Dash tool helps to write text from top to bottom. It is vertical type tool. Which tool used to remove blemishes, scars and unwanted marks? What healing tool? Healing brush tool. To increase the contrast of pixels and focus on an image, we use sharpen tool. So we use sharpen. So students, this was a complete chapter about more about Adobe Photoshop CC. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once at your own and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.